In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear viewers, welcome to English with Kamran. In a series of mini lectures, in noun phrase part 1, we talked about noun and noun phrase and different parts of noun phrase. There were 3 components of noun phrase which we discussed. And these 3 components are: noun phrase consists of pre-modification, head noun, and post-modification. So once again, noun phrase is a group of words in which the central word is a noun. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें जो मरकजी वर्ड है वो नाउन हो, बाकी सारे वर्ड्स उस नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहे हों, लेकिन ये सारा ग्रुप, ये सारा मजमुआ सेंटेंस ना बने. आपके सामने एक एग्जाम्पल है, an official letter from the bank. This is not a sentence, but it is a phrase. And what kind of phrase is this? This is a noun phrase because the head word over here is a letter. Letter is a naming word. It's a name of something. It's a group of words starting from an official letter from the bank, from an to bank, in which letter is the central word, because an official is the explanation of letter. From the bank, that is explanation for the letter. An official, this explanation for the letter is used before the noun. ये noun से पहले यूज हुई है, इस वजह से हम इसे प्री मॉडिफिकेशन कह रहे हैं. इतने हिस्से को an official तक we call it प्री मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब मीनिंग में इजाफा, और प्री ऐसा इजाफा जो हेड नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ. पोस्ट कहते हैं बाद में, आफ्टर. मॉडिफिकेशन मीनिंग में इजाफा. कौन सा लेटर है? फ्रॉम द बैंक. ऐसा लेटर जो बैंक से आया, वो वाला ऑप्शन है. फ्रॉम द बैंक इज द एडिशन इन द मीनिंग ऑफ नाउन, सो वी कैन कॉल इट पोस्ट मॉडिफिकेशन. नाउ at the moment we are going to focus on pre-modification in noun phrase part 2. This is a part 2 video. In order to understand the concept of noun and noun phrase, you should also watch part 1 video, noun phrase part 1, and this is now noun phrase part 2. Here we are focusing on pre-modification. Pre-modification is a concept. As I've already told you, it is used for the explanation of noun, which is used for before the noun. Now let's see the things which can come in pre-modification, or the typical words which can be added at the place of pre-modification, means at this portion. अब जो pre-modification में words add किए जा सकते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं. एक को हम क्या कह रहे हैं? determiner, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? adjective या adjective phrase. एडजेक्टिव एक वर्ड भी हो सकता है, और फ्रेज जैसे कि आप जानते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसका मतलब एडजेक्टिव्स का एक ग्रुप बन जाए. लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसकी क्या डिटेल है. इस वीडियो क्लिप में हमने अपने आप को लिमिटाइज कर लिया है अप टू द डिटर्मिनर. अब डिटर्मिनर का बेसिक मतलब तो यही है कि किसी चीज को फोकस करना, डिटर्मिन करना. डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिटर्मिन करता है कि ये वाला नाउन कोई दूसरा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि माई पेन या माई मार्कर, तो जब मैं कहता हूं कि माई मार्कर, इसका मतलब है मेरा मार्कर, कोई और मार्कर की बात नहीं कर रहा. एंड इफ आई से दिस बुक, so I'm saying that this book, not the other one. So when I say this book, so this is also going to be determiner. There are a variety of determiners. One of the determiners is article. Now in article we have 3 articles: a, or, an, and the. We use or, an, and the. 3 articles are present. Now what comes in demonstrative words? In demonstration means to signal. If we signal to some noun, for example, this marker is closer to me, I can call it this marker. And something which is far away from me, for example, I say that cupboard or that chair. So when I refer for
That time I use the word that. So this for closer, that for single thing. And if there are more things, for example, these fingers, they are closer to me. And I can say those chairs. It means there are many chairs. In possessive, we show the property. For example, my marker. So my shows the property of I as a person. And if we say his book, so property of him. So any word which shows the property, for example, his, my, your, their, our, they are called possessive. We can use them at the place of determiner. The fourth thing over here is interrogative words. Interrogative words which can be used for before the noun in order to question it. For example, if I carry this marker and I ask which marker, so I am using which before the marker, but also asking the question. By asking the question, मैंने question pose कर लिया, वो question क्या है कि कौन सी marker. तो जब कौन सी marker है तो ये determiner बन रहा है question करते हुए. Now let's see quantifier. Quantifier shows the quantity, for example, both chairs, some book, any paper. So these show the quantifiers, few, many. So they can also be used before the head noun. Okay. Now, after keeping in mind all these things, let's have an example. Example लेते हैं हम कोई भी, for example, हमारे पास ये वाइट बोर्ड ही है. तो बोर्ड क्या है, एक नाउन है, और कैसा बोर्ड है, वाइट. ये दो एडजेक्टिव. लेकिन इसका डिटर्मिनर हम कहेंगे तो आ वाइट बोर्ड, दिस वाइट बोर्ड, माई वाइट बोर्ड, विच वाइट बोर्ड एंड वन वाइट बोर्ड. सो वाइट तो एडजेक्टिव है, उसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले जो जो चीजें लग सकती हैं वो ये है. अब यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है डिटर्मिनर के हवाले से. डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है, अभी मैं इसके बारे में कुछ डिटेल लिखने जा रहा हूं, और वो ये है कि डिटर्मिनर को कब यूज करना है. ये बहुत टेक्निकल चीज है, डिटर्मिनर को कब और कैसे यूज करना है. I have found many students, they are making mistakes about using these determiners. Sometimes, ये मैं इसके लिए कुछ डिटेल लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस है, ठीक है, तो ये स्पेस के को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ. Sometimes डिटर्मिनर क्या होगा, हमारे पास कंपल्सरी हो जाएगा. और बाज दफा ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है. ये कब होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारा हेड नाउन कैसा है. हेड नाउन को देखते हुए हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं. या तो हमारा हेड नाउन काउंटेबल है, जैसे किसी भी चीज को गिना जा सके. मार्कर, एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर, तो इसको गिन सकते हैं. सो इट इज काउंटेबल. इस तरह बॉय, एक बॉय, दो बॉयज, टू बॉयज, थ्री बॉयज, तो हम क्या इसको गिन सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, हमारे पास ये एबिलिटी नहीं होती. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर. अब इसका इससे क्या कनेक्शन है, इसका इससे क्या कनेक्शन है, यही है कि जब हमारा हेड नाउन काउंटेबल होगा तो उस वक्त कोई ना कोई डिटर्मिनर कंपल्सरी है, उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते. जैसे कि मैं लेटर कहता हूं, तो अगर मैं कहता हूं ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द बैंक, तो ये मिस्टेक है क्योंकि लेटर को गिना जा सकता है. 1 लेटर, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स. सो कुछ ना कुछ मुझे एज डिटर्मिनर यूज करना पड़ेगा. एन ऑफिशियल लेटर या दिस ऑफिशियल लेटर, उसके अलावा ये गलत है. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, इट इज अ कार. अब देखिए, कार एक नाउन है, ये गिनी जा सकती है. इट इज कार, ये सेंटेंस गलत है और ये ठीक है. मीनिंग में कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल देयर इज एरर. क्या एरर है,
कि हमने कहा कि जब भी हमारा कोई भी नाउन जिसे हम यूज कर रहे हैं वो काउंटेबल हो, कार को गिना जा सकता है, एक कार, दो कार, तो उस वक्त हमने कोई ना कोई डिटर्मिनर यूज करना है। अब हमने एक आर्टिकल इट इज आ कार, ये यूज कर लिया, ठीक है। अब आ नहीं यूज करना चाहते, कोई और आर्टिकल यूज कर दो। अब ये कह दो इट इज, या आ की जगह पे हम माई यूज कर लो, फिर भी ठीक है। लेकिन इट इज कार बगैर डिटर्मिनर के से यूज करना कार को, ये मिस्टेक होगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये डिटर्मिनर्स कब कंपल्सरी होते हैं, जब हमारा कोई नाउन, हेड नाउन जो जिसकी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल नाउन के साथ डिटर्मिनर क्या होगा, कंपल्सरी हो जाएगा काउंटेबल नाउन के साथ। ऑप्शनल कब होता है, ऑप्शनल है मर्जी है तो लगा ले और मर्जी नहीं है तो ना लगाए। कब होगा, जब अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये डिटर्मिनर्स ऑप्शनल होते हैं। अब वाटर है ना, तो आप वाटर के लिए अगर आप कहते हो इट इज वाटर, तो ठीक है, इधर चाहे आ नहीं लगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, डायरेक्ट वाटर बस आया हुआ, तो ठीक है। लेकिन इधर इट इज कार, डायरेक्ट कार था, ये गलत है। सो हियर इट इज ऑप्शन। अच्छा, अगर आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लगा लो, कुछ ना कुछ लगा लो, क्योंकि ऑप्शन है ना, चॉइस नहीं। तो इसके लिए एक ये रूल है, वो रूल ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ और एन नेवर यूज्ड, ये कभी भी नहीं यूज होंगे। हाँ, बाकी डिटर्मिनर्स आप लगा सकते हो। आप कह सकते हो इट इज द वाटर, ये लगा सकते हो।